Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Welcome to class 8. Today we are starting our new lesson. The name of the lesson is Media and its Impact. So we start reading. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9. The students eagerly attend her class. Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. It is their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. Shall we start? She asked politely. Yes, the students nod. Teacher, okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is the role of media and its impact. To start with, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication. It shares news and information with the people. Sometimes media spreads false news, but generally it informs us about the facts around us. Do you agree, students? Yes, we do. Student 1, I would like to add a bit more to it. Teacher, yes, sure. Student 1, media helps people to share knowledge of the world. Their feelings and opinions are expressed through it. Media attracts the attention of a very large audience. Have you noticed that the first thing we do so soon after entering the house is to switch on the television? Teacher, there is no doubt about it. Student 2, let me say that media has become a part of our life. It not only informs us but also entertains us. मिस आयशा 10वीं क्लास की पसंदीदा टीचर हैं 9वीं क्लास की, और ये वजह है कि स्टूडेंट्स हमेशा इंग्लिश क्लास में हाज़िर होने के लिए शौक़ से इंतज़ार करते हैं। मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरे जमात में दाखिल होती हैं, स्टूडेंट्स को सलाम कहती हैं और हाज़िरी लगाती हैं। ये इनका ट्यूटोरियल डे है। स्टूडेंट्स पूरी तरह तैयार हैं, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, वो इसके लिए तैयार हैं। क्या हम शुरू करें? वो शाइस्तगी से पूछती हैं। जी। स्टूडेंट्स इकरार हैं और सर हिलाते हैं। टीचर, तो ठीक है, जैसा कि हम पहले फ़ैसला कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू है ज़राए इब्लाग का किरदार और इसका असर। बात का आगाज़ करते हुए मैं ये बात वाज़ेह तौर पर बताना चाहती हूँ कि मीडिया वाब्ते का ताकतवर ज़रिया है। ये लोगों को ख़बरें और मालूमात पहुँचाता है। बाज़ औक़ात मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर यह हमारे इर्द गिर्द हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ हमें इत्तला करता है। क्या आप इत्तफ़ाक़ करती हैं? स्टूडेंट्स, जी हम करती हैं। स्टूडेंट 1, मैं इसमें कुछ इजाफ़ा करना चाहूँगी। टीचर, जी यकीनन। स्टूडेंट 1, मीडिया लोगों को इस दुनिया के बारे में जानने में मदद देता है जिसमें वो रह रहे हैं। इनके जज्बात और आरा का इसके ज़रिए इजहार किया जाता है। मीडिया सामीन की एक बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल करता है। क्या आपने गौर किया है कि घर में दाखिल होने के फ़ौरन बाद पहला काम जो हम करते हैं वो टेलीविज़न का स्विच ऑन करना होता है? टीचर, इस बात में कोई शक नहीं। स्टूडेंट 2, मुझे ये कहने में की इजाज़त दें कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये न सिर्फ हमें मतला करता है बल्कि हमें तफरीह भी मुहैया करता है। टीचर, Absolutely right. Well, do you have any idea about the two major means of communication? Student 3, there are two means of communication, electronic media and print media. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspaper. It provides us information as well as entertainment. Teacher, good, it's through media that the world has become a global village. There is coverage of all the important events of the world on television. We can have an easy access to all kinds of information through media. Can we say that the world is just a click away? Teacher, maybe. Well, would any other student like to say something on it? Miss Aisha points to the student sitting at the end. Student 5, Madam, in my opinion, media plays a very constructive role for the society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction, and violation of human rights. Teacher, yes, you are right. Student 6, media has also become a mouthpiece of the downtrodden. Teacher, yes, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society through debates, reports, and talk shows. It makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Now I would invite one of you to sum up the discussion. टीचर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आपको ज़राए मवासलात के दो बड़े ज़राए के बारे में कोई इल्म है? तीसरा स्टूडेंट कहता है कि मवासलात के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। ये फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबों, रसाइल और अखबारात पर मुश्तमिल हैं। ये हमें मालूमात और मज़ीद बरां तफरीह मुहैया करता है।
ٹیچر ٹھیک ہے، یہ میڈیا کے ذریعے ہوا ہے. کیا دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ٹیلی ویژن پر دنیا کے تمام اہم واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے. میڈیا کے ذریعے ہم ہر قسم کی معلومات تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ 4، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا محض ایک ٹک کی دوری پر ہے. ٹیچر کہہ سکتے ہیں. اچھا، کیا کوئی اور اسٹوڈنٹ اس بات کو کرنا پسند کرے گا؟ مس عائشہ آخر نے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کی جانب اشارہ کرتی ہیں. اسٹوڈنٹ 5 کہتا ہے، میڈم میری رائے ہے کہ میڈیا معاشرے میں بہت تعمیری کردار ادا کرتا ہے. یہ بدعنوانی، دہشت گردی، منشیات کی اعداد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جیسے بہت سے معاشرتی مسائل کے بارے میں سوجھ بوجھ میں اضافہ کرتا ہے. ٹیچر ہاں تم صحیح کہتی ہو. اسٹوڈنٹ 6، میڈیا مظلوم اور رندے ہوئے لوگوں کا ترجمان بھی بن چکا ہے. ٹیچر جی ہاں، خوب کہا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا سب سے زیادہ چوکس ادارہ ہے. یہ جو معاشرے کے ہر حصے پر نگاہ رکھتا ہے. مباحثوں، رپورٹوں اور ٹاک شوز کے ذریعے میڈیا ہر شخص کو جواب دہ اور ذمہ دار بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کا اہم حصہ بن چکا ہے. ٹیچر اب میں آپ میں سے کسی ایک کو دعوت دوں گی وہ بحث کا خلاصہ کر سکے. Now come on the next page. I would conclude that the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact. It works honestly. Teacher, good conclusion. I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. The bell rings. Miss Aisha says goodbye to the class and leaves. اسٹوڈنٹ میم کہتا ہے کہ میں یہ کہتے ہوئے بحث کو ختم کروں گی کہ میڈیا اگر دیانتداری سے کام کرے تو یہ مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اور اصلاحی اثر مرتب کر سکتا ہے. ٹیچر اچھا نتیجہ پیش کیا ہے. میں خوش ہوں کہ آپ سب نے بحث میں حصہ لیا ہے. اپنے خیالات بہت اچھے طریقے سے بیان کی ہیں. گھنٹی بجتی ہے. مس عائشہ کلاس کو خداحافظ کہتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. سو دس از دا اینڈ آف اوور lesson. I say Allah Hafiz to all of you. Take a good care of yourself.